Hello friends, let's try and understand the difference between these two sentences, whether they are correct or incorrect, and how to use fewer and less in our daily conversation. Okay, today fewer people watched my videos, and today less people watched my videos. Which of these sentences you think is correct? Or both of these sentences are correct, or neither of the sentences is correct? You can guess. Okay, fewer people watched my videos today. It means yesterday few people watched my videos and today fewer people watched my videos. आज और कम लोगों ने भी मेरे वीडियोस देखी. कहने का मतलब कल जो लोगों ने मेरी वीडियोस देखी उनकी संख्या बहुत कम है, फ्यू ना के बराबर, पर आज तो और भी कम है. सपोज कल 10 लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, आज 5 लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है, means today fewer people watched my videos. Okay, now let's understand the second sentence. Less people watched my videos today. It means if 10 people watched my videos yesterday and today 5 people watched my videos, means today the number of people who watched my videos is less than the number of people who watched my videos yesterday. इस तरीके से हम ये देखते हैं कि लेस कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे नंबर्स थोड़े हों या बहुत. अगर मैं कहूँ 10,000 people watched my videos yesterday and 9,000 people watched my videos today. So today the number of people is less, means less people watched my videos today. लेस का यूज़ हम कर सकते हैं चाहे संख्या कम हो या ज़्यादा हो, कंपेयर करने के लिए. ओके, और काउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया लेस पीपल. जबकि फीवर का यूज़ सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता. ओके, जबकि लेस का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ किया जा सकता है. लेट्स सी दिस पेयर ऑफ एग्जांपल्स. आई हैव फ्यूअर नॉलेज ऑफ इंग्लिश. Knowledge is an uncountable noun. We cannot count knowledge. Okay, so fewer knowledge is incorrect. We cannot use fewer with uncountables. But I have less knowledge of English means yes, I'm comparing knowledge of English and knowledge of Hindi. Okay, so I know Hindi more than I know English, so I have less knowledge of English. Here we are comparing, okay, making comparison between two things. So less can be used with uncountables as well. We can use less as an adverb, okay, but we cannot use fewer as an adverb. I speak less than you means you speak more. I speak less means I speak less than you. We can add much before less. Okay, I speak much less than you. मैं तुमसे बहुत कम बोलता हूँ, बहुत कम. यानी यहाँ स्पीक वर्ब की विशेषता बतला रहा है लेस. ओके, शी इज़ लेस ब्यूटीफुल दैन यू. यू आर ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, बट शी इज़ लेस ब्यूटीफुल दैन यू मीन्स यू आर मोर ब्यूटीफुल दैन शी. ओके, इस तरीके से लेस का यूज़ वर्ब के साथ एडवर्ब के रूप में, या फिर एडजेक्टिव के पहले, या फिर अन्य एडवर्ब के पहले भी एडवर्ब के तौर पर किया जा सकता है. जैसे शी डांस्ड beautifully, you danced beautifully, but she danced less beautifully than you. Okay, so here less can be used before an adverb to modify that adverb. And if you think the video is helpful to you, please like and share it. If you are on the channel for the first time, please subscribe to the channel. Thanks for watching.